Hello, my dear students. Welcome back to our class, Smart Maths by Surbhi. Today, we are starting with chapter 2, Power Play from Ganita Prakash. And trust me, this chapter is going to surprise you. Have you ever imagined if I fold a simple paper again and again, can I reach the height of a building? Or even the height of the moon? Sounds impossible, right? But today we will see how numbers grow so fast that they shock us. So first topic is experiencing the power play, paper folding activity. Let's start with a simple activity. Imagine the thickness of a paper is 1 unit. Fold once, the thickness becomes 2. Fold twice, the thickness becomes 4. Fold thrice, it will become 16 times. And fold 5 times, it will become 32. What do you notice? Yes, it is doubling every time. So, mathematically, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. But instead of writing it long, we write it as 2 raised to the power 5. This small number on top is called exponent. So get your notebooks ready because today we are entering the world of exponents. Our next topic is exponential notation. When a number multiplies by itself repeatedly, we write it in exponent form like 3 into 3 is 3 square, 5 into 5 into 5 is 5 raised to the power 3, 7 into 7 into 7 into 7 is 7 raised to the power 4. This is power play of numbers. Small start, big growth. Here, if you see 3 into 3 is equals to 3 square. Here, the base is 3 and exponent is 2. So, what is a base? Base is a number being multiplied and exponent is how many times it is multiplied. Now, you tell me what is 2 raised to the power 3? 2 into 2 into 2, that is 8. And what is 10 square? It is 10 into 10, that is 100. This method helps us write very big numbers easily. Now, the next topic is laws of exponents. Now comes the most important part, the rules. So, I'll start with that. So, the first we have is called a product rule. Now, what happens in this product rule? Now, as it is said, product means multiply. So, if I have a number a raised to the power m, I'll always write it in exponents form. And a raised to the power n, so my answer becomes m plus n. I'll give you a simple example also, so it will be very easy for you to understand. एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2. अगर आप देखेंगे तो इनके बेस क्या है, सेम है, दैट इज 2. बट द पावर्स आर डिफरेंट. सो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को एड अप कर लेंगे. सो दिस बिकम्स 3 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 5. सो व्हेन बेसिस आर सेम, powers add up. The next rule we have is a division rule. Now what happens in division rule? अगर मेरे पास a की पावर m divided by a की पावर n, my answer will be m minus n. हम हर एक चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे. एग्जाम्पल इज, अगर मेरे पास है 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 2. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. और जब पावर ऊपर जाती है, बेस सेम होनी चाहिए, दैट इज 5, बट जो पावर्स होगी वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो माय आंसर बिकम्स 5 की पावर 4. सो द रूल सेज व्हेन डिवाइडिंग subtract power. The next one we have is, just a minute. Okay. So the next one is power of power. Now what is this power of power? The third one is power of power. Any guesses?
एज द नेम सेज पावर ऑफ पावर, मतलब पावर की एक और पावर। तो अगर a रेज टू द पावर m है, सो m की एक और पावर लगा देंगे, सो दिस बिकम्स पावर ऑफ पावर, a रेज टू द पावर m की पावर n। सो व्हाट हैपेंस, वी मल्टीप्लाई, सो दिस बिकम्स a की पावर m इंटू a की पावर n। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मेरे पास है 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर, सो मैं क्या करूंगी, पावर्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दिस बिकम्स 2 की पावर 6, 3 2 इज 6। नाउ द फोर्थ वन वी हैव इज जीरो पावर रूल। अब ये जीरो पावर रूल क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है 7 रेज टू द पावर 0, उसकी पावर क्या है 0, सो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। सो इट इज बेसिकली a की पावर अगर 0 होगी, सो माय आंसर विल बी 1। अब वो डिवाइड की फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तभी भी 0 ही आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 2, सो आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 0, दैट इज ओनली 1। Next comes magical pond story. Now listen to the magical story. One lotus in a pond doubles every day. तो डे 1 में 1 था, डे 2 में 2, डे 3 में 4, डे 4 में 8, डे 5 में 16। सो क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है ईच डे। सो द क्वेश्चन इज, इफ पॉन्ड बिकम्स फुल ऑन डे 30, ऑन विच डे वॉज इट हाफ? तो अगर आप डे 1 2 3 4 5 ऐसे 30 तक कर लेंगे, तो आंसर विल बी डे 29, बिकॉज इट डबल्स एवरी डे। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इट लुक्स स्लो एट फर्स्ट बट सडनली एक्सप्लोड्स। सो हम इसको रिलेट कर सकते हैं हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से, वायरल वीडियो से, एंड फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? Let's make it fun. 7 dresses, 2 caps, 3 shoes. How many different looks can we make? No idea? So I'll do it 7 into 2 into 3, that is 42. This is called multiplication principle. If same choice repeats, so 3 into 3 into 3 into 3, that is 3 raised to the power 4. Exponent also shows repeated choices. So students, today we learned paper folding experiment, exponential notation, laws of exponents, magical pond story, and counting combination. If you understood today's concept, type in comments Power Play Master. In the next video, we are going to continue page-wise. If this video helped you, don't forget to like, share with your friends, subscribe for full chapter series. See you in the next class. Till then, keep learning and keep shining. Bye-bye.